প্ৰকৃতিৰ অফুৰন্ত সৌন্দৰ্যৰ মাজত সেউজীয়া পাহাৰৰ আবেষ্টনীত থকা পূব অৰুণাচলৰ লংডিং জিলাৰ কাইমই গাঁওখনৰ বিষয়ে বহু বিশ্বৰ অতি কম লোকহে অৱগত। অন্য কথাত ক'বলৈ গ'লে এই গাঁওখন এখন সাধাৰণ গাঁও, যিখন শেহতীয়াভাৱে যোৱা ২৭ ছেপ্টেম্বৰৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ উপলক্ষত ৰাজ্যিক পৰ্যটন দপ্তৰে শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁৱৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছে। গাঁওখনত থকা পৰ্যটন বিকাশৰ অপাৰ সম্ভাৱনাৰ দিশটো উন্মোচন হয় গাঁওখনলৈ যোৱা এক যাত্ৰাৰ যোগেদি। লংচান জিলাৰ পৰিষদৰ সদস্য তথা তৰুণ আৰু কৰ্মস্পৃহাৰ যুৱক ৰাজীৱ ৱাংছাৰ নেতৃত্বত এই সন্মানীয় বঁটা পোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ লোকসকলৰ উৎসাহ বহুগুণে বাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰলৈ তেওঁলোকৰ গাঁওখনক উন্নীত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে। শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও ২০২৫ বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত গাঁৱলৈ অহা পৰ্যটকসকলক কেনেকৈ আদৰণি জনোৱা হ'ব তাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ কাইমই গাঁৱৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য গাংপান পাঞ্চাৰ সভাপতিত্বত এখন গাঁও সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সভাত গাঁও পৰ্যায়ৰ পৰ্যটন বিকাশ সমিতি, মহিলা সাংস্কৃতিক গোট, আদৰণি তোৰণ, কানুবাৰী চেক পইণ্ট, ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ, লংডিং নগৰ আদিত চিনেবৰ্ড স্থাপন, হোমষ্টে নিৰ্মাণ, চৰাই চাবলৈ উপযুক্ত ট্ৰেকিং ৰোড, বাঁহৰ কাপ মগ আদিৰ দৰে পৰিৱেশে অনুকূল সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ আদি বহুতো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। तो अभी यहाँ का जो जितना कमियाँ उन लोग बस्ती वाला बताया उसको हम अभी डिपार्टमेंट में प्लेस करेगा, फॉरवर्ड करेगा और डिस्कस करेगा और जो भी हो सकता है डिपार्टमेंट तो ज़रूर डेफिनेटली काइमोई विलेज को तो हेल्प करेगा, क्योंकि प्राइस भी तो अवार्ड भी टूरिज्म डिपार्टमेंट से ही दिया स्टेट लेवल में। सभात उपस्थित लंगडिंगर जिला पर्यटन विषया ताननियुक कोपाके वानसु जनगोष्ठीर जीवंत सांस्कृतिक संरक्षण और ঐতিহ্য और यार स्थायित्वर ऊपर बक्तव्य आगबढ़ाय। गाँव सभात लंगसान आंचलिक ब्लकर जिला परिषदर सदस्य राजीव वांगसा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक दप्तৰৰ जिला परामर्शदाता सुनाई वांगपान, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक दप्तৰৰ वाका शाखार कनिष्ठ अभियंता वांगरे लोंगवांग, गाँवबुढ़ा गाँव पंचायतर सदस्य गाँवपानी और अनामय समिति, काइमय पर्यटन समिति, गाँव विकास समिति, काइमय महिला समिति, काइमय छात्र संघ, गाँव युव समिति आदि अंशग्रहण करिছিল। गाँव सभात काइमय गाँवर कर्तृपक्षই एक सिद्धांत गृहीत करी अरुणाचल प्रदेश खुआ पानीर उत्स संरक्षण आईन 2023-25 5 नং आईन अनुसरि खुआ पानी उत्स संरक्षणर বাবে घोषणा करे। लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है काइमोई विलेज, और ये सुंदर वातावरण एक पत्थर के ऊपर बना हुआ गांव है। और ये गांव जो है सारा गांव में आप बाद में देखेंगे पूरा पत्थर का ही है, नेचुरली पत्थर है ये में। तो ये पत्थर के ऊपर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, सुंदर सा गांव है। तो वैसे करके हमारे यहाँ बहुत सारा पोटेंशियल है और हिस्टोरिकल टूरिज़म भी हमारे यहाँ है। इसका बाद आपका ट्रेडिशन एंड कल्चर टूरिज़म है हमारे यहाँ, ये तो पोटेंशियल है सारा वांचो में है। ये खुआर परिष्कार परिच्छन्नता रक्षार क्षेत्रत प्रतियोगितामूलक मनोभाव जागृत কৰিবলৈ गाँवर पृथक महिला गोट गठन কৰা হৈছিল। এই অনুষ্ঠানত শীৰ্ষ 3টা সক্ৰিয় মহিলা গোটক পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত কৰা হয়। বঁটা পোৱা শীৰ্ষ গোটকেইটা ক্ৰমে সিংবাঞ্জা কলনী, সিংকাও কলনী আৰু সিংগে কলনী। ডেস্ক ৰিপোৰ্ট ডিব্ৰুবাৰ্তা।